Welcome to Family Food Tale. Family that eats together, stays together. जिंदगी में बहुत कुछ होता है ना सीखने के लिए. सारी रेसिपीज तो सबको पता नहीं होती. स्पेशली इंडिया में there's so much to learn, isn't it? तो देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू फैमिली फूड टेल्स. तो आज मैं मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड को बुलाने वाली हूँ जो हमको ये स्पेशल रेसिपी और अपने स्पेशल टिप्स दिखाने वाली है. So let's welcome Ananya Banerjee. Hi Ananya, thank you. Thank you so much. To see you. Chef Ananya, she's an author, she's a food blogger, she's an artist. If you don't know, she's a fantastic artist. और बहुत कुछ है, हम बातों में बताएंगे आपको. So good to see you here. Yes, absolutely. It's great to see you. Yes. So आपने क्या बनाया दिखाने वाले आज हमारे viewers को? I'm thinking of doing an iconic Bengali preparation. बिल्कुल. जो सब Bengalis को बहुत favorite है, चिंगड़ी मलाई करी. Oh, wonderful. That's also one of my favorites. मुझे बहुत ही पसंद है. प्रॉन्स और चिंगड़ी मलाई में क्या होता है ना, वो प्रॉन्स इतने सॉफ्ट रहते हैं. Yeah. माउथ वाटरिंग. तो क्या करें सबसे पहले प्रॉन्स लेना है और उसको नमक और हल्दी लगाना है. ओके. तो we'll marinate the prawns just with haldi and namak. Wow. So just add a little haldi. Salt to taste. इतना और Yep, चाहिए. that's fine. इसको Just mix it up. हाँ. So there is one thing about cooking fish or seafood in Bengali cuisine. हाँ जी. It's always sautéed or fried before. Okay. So, बहुत सारे recipes आपको मिलेगा not Bengali हाँ जी. जो कच्चा fish को ग्रेवी में डालते हैं. हम कभी ऐसे नहीं करते अच्छा. हैं. My mother will say कच्चा डाल दिया, कच्चा फिश. तो कच्चा फिश वो अलाउड नहीं है बिल्कुल बंगाली खाना. बिल्कुल नहीं. So हल्दी नमक सिंपल मैरिनेट बट यू हैव टू सॉटे इट फर्स्ट. थोड़ी देर रखना है कि सॉटे नहीं Okay. इमीडिएटली. इसमें क्या डाल? घी, तेल, मस्टर्ड ऑयल. यू आर कुकिंग बंगाली फूड. तो कितना डालना है अंदाज से अबाउट 2-3 tablespoon. लेट इट हीट अप बिकॉज मस्टर्ड ऑयल इज वेरी पंजेंट. सो अगर उसको हीट अप करो स्मोकिंग पॉइंट तक, then it reduces that too much of pungency. तो आप बताइए और भी आप क्या करते हैं? जैसे you run some cloud kitchens or something? I have a delivery kitchen. Nice. Every weekend I do recipes from all around the globe, not only Bengali. अच्छा, not only you do everything. Yeah. Wonderful. And, So what's it deliver. called? Ananya's Ananya. kitchen, yeah. Nice. तो अभी smoking point तक आ गया? आ गया. It's very important that you don't overcook. Correct. तो इसको हल्का सा सौते. ये ऑलरेडी देखिए. Yeah. It has curled up. करेक्ट. कर्ल हो गए हैं. Orange भी हो गया. ऑरेंज भी हो गया है. We can take it out because in the gravy it will cook again. So we'll keep it aside. ठीक है. Now make the gravy for this. थोड़ा सा mustard oil वापस डालते हैं. And I'm adding a little bit of ghee as well. Okay. Yeah, so a little tej patta. And I'll add some aromatics like long, dalchini, and cardamom, इलायची. I think Indian खाना में इलायची तो जरूरी है. And make it yummy. Yes. Some jeera. Correct. Yeah. And here we have a mixture which has onion, ginger, tomatoes. Okay. So we are going to add this. Yeah. And jeera is like done. इसको बस अभी पकाना है जब तक वो कच्चा फ्लेवर बिल्कुल निकल जाए. So basically when you're sautéing it, the oil will release. Correct. At that point add the powder masalas. Like add a little turmeric, chilli powder, as much जितना तीखा चाहिए. Some हरी मिर्च also. Just cut the tips. Okay. So it won't be very tikha. अच्छा. And it will release all the flavor. And then a little jeera powder. And this is Bengali garam masala. Garam masala is garam masala. Of course. But
Rest of the country, garam masala has a lot of ingredients. At least 6, 7, 10 ingredients. तब जाके garam masala बनता है. बिल्कुल. But Bengali garam masala is, I'll show you just these 3 things: cinnamon, cardamom and cloves. Wonderful. Equal proportion में आप grind कर लो. Okay. आपका गरम मसाला रेडी है. और ये हर बंगाली डिशेस में जाता है. So now थोड़ा तेल छूटा है. This is very important. मतलब ये मसाला तैयार है. And in Bengali we call it koshano. अभी तेल जब छूटा तब जाएगा coconut milk. बस. So this let it cook again. It should be cooked till little rogan or oil comes on top. Okay. And I always keep saying, prawn jaye par prawn na jaye. Oh, of course, 100%. Even there's this dear friend of mine, Deepa, you know Deepa. Yeah. So that's her favorite. Yeah. Prawn jaye par prawn nahi jaye. ये तो थोड़ा पक गया है. So some salt to taste. Salt to taste, sure. And one more thing, you have to add a little sugar. Okay. So it's a little thick to my. Correct. So let's add a little water, because when I put the prawns back in, I will not cook it too much. Okay. Just a little bit. Once it just comes to a boil, we'll add the prawn. I'm so happy you've come here today and you're sharing this wonderful recipe with our viewers. And with me, I mean, I'm going to just go and try this for my damad. You know, na? Yeah, you must. Got married recently. You must. Yeah. And I'm sure he's going to love this recipe. He घर पे ना शाम को वो ही खाना बनाते हैं. Wow. So my daughter is so lucky. True. So now it's time to add the prawns. Add the prawns to the gravy. Perfect. फटाफट डाल देते हैं ये prawns हम इसमें. Prawns डालने के बाद बिल्कुल इसको ज़्यादा नहीं पकाना है. 2 मिनट जैसे ही उबाला आ जाए, I think वो एकदम ready हो जाएगा. Yeah, that's the secret of having succulent, soft, nicely cooked prawns. नहीं तो rubbery prawns किसको पसंद है? ये बिल्कुल ready है. This looks absolutely ready. गैस बंद कर दें. और इसका एक कसर बाकी है. हाँ जी. जो final flourish. ठीक है. थोड़ा सा घी ऊपर से drizzle कर देना. वाओ. और ये इसके ऊपर जाएगा गरम मसाला. बंगाली गरम मसाला. गरम मसाला, not गरम मसाला. So इसका जो फ्लेवर है ये बहुत वाओ. I think दालचीनी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है. Then some cashews, you can fry it or just sprinkle that on top. After all, you're impressing the jamai. जमाई बाबू को impress कर रहे हैं. हाँ, little raisins. And a little bit of that coconut milk, what you reserved. Okay. And close this. Okay. You close it for 5 minutes or so. What happens is it takes on all the aroma what you have added now. Oh, perfect. Yeah. So plate कर देते हैं. Plate करने के लिए और of course steam rice तो चाहिए. तो ये बिल्कुल अब ready है. मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है. And ये जो आपने prawns रखे हैं, I see it, you've kept it with the head. Yeah. So there's a reason for that. If you keep the head and the tail intact, it looks big. ये थोड़ा सा घी और गरम मसाला. गरम मसाला. गरम मसाला. Correct. Did I get it right? Absolutely. And you want to put spot some. on. Spot on right. And this mirchi? Mirchi also, we can just place it here. And here you go. Awesome. It's looking so good. Thank you so much for coming here and sharing your wonderful recipe with me and with the viewers. Thank you everybody for watching this recipe. I hope you like this recipe. I'm sure you like this recipe. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. And keep watching Sanjeev Kapoor Khazana and Family Food Tales. And thank you so much. Bye for now. Bye. Bye. और अगर आपने कोई स्टेप मिस किया है तो do watch the recap.